गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री, इसमें हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। यानी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, इसके बारे में बताना है। फॉलोइंग वर द सर्कमस्टेंस दैट लेड द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। During the 18th century, French society was divided into three states. Only the member of third state had to pay taxes. The third state was made up of peasants, consisting about 90% of the population. However, only a small number of them honored the land they cultivated. जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लगभग 90% थे, बट जहाँ पे खेती होती थी उनके पास लैंड जो था वो बहुत ही कम था, जिससे कि कल्टीवेशन बहुत ही कम हुआ करता था। मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉय मैनी प्रिविलेजेस। क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी। बाय बर्थ दे डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। उनको किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियंस इन 1789। मेन पॉइंट जो है उसको आप ध्यान पे रखना है सिर्फ आपको, कि 23 मिलियंस पॉपुलेशन थी 1715 में और 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई 1789 में। सो द प्रोडक्शंस ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप pace with growing demands. This led to price of bread, the main diet of majority, rise rapidly. इसके कारण क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी, लेकिन जो पैदावार थी वो तो सीमित थी। तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें जो मेन डाइट्स का जो आइटम था जैसे ब्रेड था उसके रेट बढ़ने लगे। न्यूज़ दैट Louis XVI was planned to impose more taxes, generated anger and protest against the system of privilege. अब लोगों में ये बात आ गई कि भाई लुइस 16 जो हैं वो टैक्स को और बढ़ाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? मैंने सबसे पहला क्वेश्चन है विच ग्रुप फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट, किस ग्रुप को बेनिफिट हुआ इस रिवोल्यूशन के कारण और किसे सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और किन समूहों को निराशा हाथ लगी। तो different groups of the French society benefited by the revolution in the following ways. Rich men above 25 years of age were benefited from the revolution. First and second state people were forced to relinquish power. All the women and men below 25 years and people who did not give tax were disappointed with the outcome of the revolution. Question number 3. Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century. The legacy of French Revolution lie in the idea of liberty and democratic rights. This idea spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where federal systems were abolished. People living in different colonies modified the ideas of freedom from bondage to suit to their own movements to create a sovereign state. Question number 4. Draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to
French Revolution. Democratic right we enjoy today, whose origin could be traced to the French Revolution, are right to equality, right to freedom, right against exploitations, freedom of speech and expressions. Question number 5. Would you agree with the view that the message of universal right was bested with contradiction? Explain. The message of universal right was certainly best with contradictions. It is because the Europeans enjoy several rights themselves, but they had established colonies in Caribbean and African countries. In those countries, they brought slaves from local chieftains and sold them to a plantation owner. These slaves were subject to inhumane treatment at the hand of their owner. They had to lead a miserable life till they meet with painful death. How would you explain the rise of Napoleon? Napoleon Bonaparte became the Emperor of France in 1804. He saw his role as a modernizer of Europe. He conquered neighboring European countries, disposed dynasties, and created kingdoms where he placed members of his family. Initially, people thought him to be a liberator who would bring freedom from them, but soon it was realized that his army were an invading force. Napoleon was finally defeated at Waterloo in 1850. शुरुआत में लोगों को लगा कि भाई नेपोलियन जो है वो एक लिबरेटर की तरह आया है, हमें आज़ाद कराएगा, लेकिन कुछ समय बाद जो है उसकी आर्मी का रूप जो दिखा लोगों को, एक क्रूर आर्मी का रूप दिखा उनको, आर्मी जो थी उनकी उसका, और फाइनली जो नेपोलियन था वो डिफीट हुआ कहाँ पे, तो वाटरलू के युद्ध में 1815 में। तो इसके थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करिए।